Hello, everyone. Welcome back to Dramalog. We are here with a new episode. Today's plan is to review the brand new episode of Dunyapur. It's episode 8. A lot has happened in this episode. So me, Sunny from Dramalog, Sana from Dramalog, and Faraz from Drama Pakistani are all excited to share our views. Let's get started. Hi, everyone. How is it going? Hey, how's it going? Alhamdulillah, good. Assalamu alaikum, Faraz. Assalamu alaikum, everyone, whoever's listening to us. How's life? Assalamu alaikum everyone. Hi Sunny, hi Sana. मजा आएगा. अब कराची में आ गई हल्की हल्की सर्दियां. पहली दफा हल्की हल्की रात में थोड़ी थोड़ी आई है, लेकिन हमें बहाना चाहिए होता है. इस सर्दी में हम चाय पीते हैं, जो मैं पी रहा हूँ, और मेरी चाय को देख के सना ने भी चाय बनाना शुरू कर दी है. और मैं मूंगफली खा रहा हूँ साथ में. तो इफ यू गाइज हेयर अ लिटिल बिट ऑफ मूंगफली साउंड तो बर्दाश्त कर लीजिएगा. You know what I'm eating? सर्दी नसीब होती है. जी बताएं. You know what I'm eating with it? I got some almonds, cashews, and pistachios. क्या Badam. सर्दी आपकी तरफ ज्यादा है. Power boost. Yeah, it's like 40s, like 40 Fahrenheit. 40 Fahrenheit. I don't know how much that is in Celsius. मैं तो 10 या 12 होगा सेल्सियस. Is that cold? Is that cold in Celsius? I mean, For do you guys get that much? Yeah. So that's what it is. And this is like mild weather. This is not even cold. Like, but it's cold. Like lag raha hai, you know. तो अभी तो स्टार्ट करें. अभी तो स्टार्ट. Yeah. तो how low it can get? I'm actually. We've gotten the polar vortex here. We got -50 one time. -50 Fahrenheit. -20 कभी हो जाता है. Some days like when I wake up in the morning, it's like 0 degree, -1, -2. बाप रे बाप. और सनी आपका कितना चला जाता है? हमारा 0 तक जाती है. Occasionally, not very often. Typically, it hovers around 2 to 5 in the worst situation. So if I have to move to the US, I'm gonna go to California or Houston, Texas. No Chicago for me, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होती इतनी सर्दी. You know, Houston में problem ये है कि there's एक तो snakes हैं, right? Rattlesnakes, snakes and lizards. वो वाले snakes बर्दाश्त कर लेंगे. जो इंसान होते हैं ना, इंसान बने हुए snakes, वो बर्दाश्त नहीं हो पाते. वो भी यहाँ नहीं है. वो भी शायद ह्यूस्टन में ही है. अगर कोई ह्यूस्टन से सुन रहा है तो प्लीज सना साइड के ह्यूस्टन में सांप वैसे वाले भी बहुत ज्यादा है. There's a huge population, Desi population there. A lot of them are from Karachi. नहीं, अब ये नहीं बोले मुझे आप कि कराची वालों में सांप होते. नहीं ना. सना is also from Karachi. Anyway, तो इतना सर्दी पे बात हो रही है, तो अभी हम बात करते हैं उस ड्रामे की जो कि बड़ा ठंडा जा रहा था, और एकदम से लास्ट एपिसोड 8 जो है उसने एकदम से शूट मारा है, और सना और सनी दोनों को बड़ा पसंद आया है. तो मेरे ख्याल में पहले कौन बात करेगा इसके बारे में? I'll talk first. Sunny. No, not Sunny. Sana. Can I go first? हाँ जी, बिल्कुल. The mic is all yours. So my favorite scene was the one between the SHO and the Nawab. No, not Nawab. Adam. Noro's Adam. That was one of my favorite scenes. When he goes in there and then asks him, about मेरे बेटे को, can you have him released? So that was my favorite scene. The other part that really intrigued me was that the SHO's wife, when she called him hysterically, she said, mera beta kidnap ho gaya hai. She didn't say hamara, she said mera. And then she says, I called the school and the school said that he's been picked up by his uncle, but he does not have an uncle. You know, you wouldn't say that to a biological father, because a biological father would know if the kid has an uncle or not. So I'm thinking that he's not his biological son. जबरदस्त है ना. क्या प्यारी थ्योरी लाई हैं आप यार. मैंने नहीं, मेरे जहन में हाँ थोड़ा बहुत क्लिक हुआ था मुझे कि वाई सिंह इसका कोई चचा ही नहीं है. तो जाहिर है अगर चचा होता तो उसके बाप को तो पता होता ना ऐसे चो कि मेरा कोई भाई नहीं है. तो हाँ, यू आर राइट. दिस इज हो सकता है कुछ हो इस तरह का आगे जाके कोई. What about you, Sunny? About this particular scene, yeah, I mean, after Sana told me, actually she told me yesterday itself when she was watching the show. And I actually went back and checked again, and she's right. And she does mention this mera beta. However, the display of emotion from the SHO was very, very paternal, right? So I'm not sure if there is a story like that, or is it more of a
sort of a directional flaw? I mean, I don't think like if a person adopts a child, Yeah. they can have that bond. I mean, actually, there are two families that I know here in Chicago area. One has adopted a baby from Morocco. Well, they have their own kids too, and they have the same, you know, amazing like paternal bond or, you know, parental Yeah. bond with them. And there's another one who actually adopted from Karachi. No, not from Pakistan. They actually adopted a little baby girl she's now 20 in her 20s. They adopted him after the Kargil War. So her dad passed away. Anyways, that's another story. Go on. Right. Absolutely. Okay, anyways, I'm just saying that. Yeah. No, Yeah. absolutely true that even if it's your son, you can have strong paternal feelings for him. So I'm just waiting to see, like, you know, where this goes on that particular topic. And definitely the pleading part, from when the SHO comes to the cell and pleads to them to save his son, that was really a very nice scene. For the first time, I felt like the expressions and the performances were pretty spot on. Sami did such a phenomenal job in expressing his desperation there. And even before that, when he was talking to his colleague, right, that he has to leave and he has to leave right away. So that was very nicely done. For me, the highlight was we kind of see Anna's ruthlessness, and I think I see a side of Anna which is, I think, even more evil than we expected, and it could be just my perception. So Anna, as opposed to others who believe in just killing, right, just, you know, decimate and kill, Anna is more like, you know, you kill partially, but then you also imprison and humiliate the others, so that you leave a long-term fear in the minds of people who are watching. So, and I think that is a really more evil way of dealing with things. So this particular dystopian world, people are okay with killing each other, but they are probably very uncomfortable getting humiliated or in front of, or embarrassed in front of everyone. And Anna actually does that to Zabardast Kasai. So for me, that was actually, I felt a little goosebump there. Lastly, I think the other big revelation was that Aurangzeb is now exposed. So I wonder how that is going to work out. But yeah, those are my takes from this week's episode. मेरे ख्याल में तो काफी बेहतर थी एपिसोड. सना, आप कुछ कह रही थी? Go ahead. I do want to mention the guy with Khushal. He's very good looking. What's his name? पता नहीं, देखना पड़ेगा. Okay. कसाई का जो बेटा है ना? हाँ. सना, आपको क्या दिखता है खूबसूरती में? मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि खुशहाल अपने आप में भी बड़ा गुड लुकिंग है, लेकिन आपको उसके साथ में जो कसाई का बेटा है, जबरदस्त कसाई का, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगा. He had kinder eyes. So you look for eyes. अच्छा. Eyes में kindness होनी चाहिए. लेकिन looks can be deceiving. नहीं, आंखें झूठ नहीं बोलती. ओए होए होए होए, ये हमारा ना, मैं एक बात बताता हूँ आप सबको जो सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट अब ड्रामा पे नहीं रहा. वो जो रात को 12 बजे के बाद जो आते हैं ना, जिसमें इस तरह की बातें की जाती हैं, शायराना और गजल वाली, कि आंखें झूठ नहीं बोलती, हवाओं के दोष पे मैं आ रहा हूँ आपके लिए FM. सनी, दिस इज अ फनी थिंग इन पाकिस्तान. रात को 12 बजे के बाद के शो जो होते हैं ना, उसमें बहुत ही इस तरह की बातें होती हैं. तो सना इज गेटिंग इनटू दैट मोड कि आंखें झूठ नहीं बोलती. Anyway, I was reading Rumi poetry today, Rumi prescription today. So maybe that's... Oh, yeah, that explains. अच्छा, I'm sorry, I didn't get it. क्या मतलब है इसका? I was reading the book Rumi, the Rumi prescription. ओह, अच्छा, रूमी की किताबें पढ़ रही हैं. हाँ, ये असर तो होना है. तो ये असर पॉडकास्ट पे नहीं होना चाहिए. ये असर आपके जो शरीके हयात हैं उन पे भी दिखना चाहिए. 12 बजे के बाद. वो सनी वो 3 इडियट्स नहीं सॉरी, पीके याद है आपको? रेफरेंस याद आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ओके, सो सारे लिसनर समझ गए. अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, आप ना समझे, आपको समझना नहीं, आपको करना समझना. But Rumi has like talks about Allah, you know, mostly. हाँ, वो तो हाँ, सॉरी, मजाक में चली गई बात. ड्रामे पे बात करते हैं भाई, ड्रामे पे बात करें. जो 3-4 सीन सनी ने जिनका तस्करा कर दिया और जिक्र कर दिया. अच्छा, मुझे अभी याद आया कि जब वो एक कन्फ्रंटेशन सीन होता है, मैं एक तो ये चीज कहना जरूर चाहूंगा कि ये पहली एपिसोड्स हैं, या पहली एपिसोड्स कह लें, या कुछ इस तरह के एपिसोड्स हैं जब से
आपका नौरोज आदम जेल में गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस नुमान एजाज की एक्टिंग में थोड़ी बेहतरी आ रही है, एक ठहराव आ रहा है, वो एक खास डायलेक्ट में बात करने लगे हैं जो कि इससे पहले मिसिंग था। और वो सीन मेरे हिसाब से बड़ा पावरफुल था जब समीर खान नौरोज आदम के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो। Yep, that was my favorite scene too. हाँ, तो शायद हमारी ये उस थ्योरी को शायद गलत कर देगा जो अभी सना ने पेश की है कि शायद वो उसका असली बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से कहता है कि औलाद की खातिर इंसान बड़ी बड़ी चीजें करता है, तो नौरोज आदम मेरे ख्याल से सिंपैथी या एम्पैथी उसमें भी पैदा होती है, क्योंकि ये सारी जंग और ये सारा जो केओस मचा है, ये स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था कि उसके दोनों लड़कों को नवाब ने पकड़ लिया था। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, ये एक रेफरेंस इस तरह से भी हो सकता है कि इसलिए उसको वो अपील किया। So और another, oh yeah, go ahead, Faraz, go ahead. I'm sorry, go ahead. और एक चीज, जैसे आप लोगों ने अगर गॉडफादर की बुक पढ़ी हो, मूवी तो सबने देखी, बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी हुई गॉडफादर, लेकिन जो उसकी बुक है, जो मैं बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में जो चीज मुझे बार बार एक चीज समझ में आ रही थी कि जो वो मेन गॉडफादर होता है, विक्टर कैरेलियोनी नाम होता है, आई गेस उसका पूरा नाम, इफ आई एम रॉन्ग यू गाइस कैन करेक्ट मी, लेकिन ही ऑलवेज, हाँ, वो ही ऑलवेज से दिस वन लाइन कि आई विल मेक हिम एन ऑफर दैट ही कैन रिफ्यूज। और फिर उसकी पर्सनालिटी में ये होता है कि he doesn't spend money to buy things, he buys loyalties of people, and he gives favor to others so that he can use it later. तो ये नौरोज आदम ने जैसे जबान दी उसको कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा सुबह तक आ जाएगा तुम्हारे पास, तो नौरोज आदम को उससे सिर्फ जो है ना, आगे जाके कोई ना कोई ऐसा फेवर है जो नौरोज आदम उससे यूटिलाइज करेगा। एंड यू सी के अब समीर खान जो है वो एक तरह से इंडेप्ट हो गया है, कर्जे में आ गया, उस एहसान के कर्जे में आ गया है, कि वो बोझ में आ गया है कि वो उसको आगे फेवर देगा। सो नाउ द नेक्सस इज कमिंग इनटू सर्कल। सो दैट वाज फॉर मी, दैट सीन हाईलाइटेड द शिफ्ट इन द स्टोरी, कि आगे जाके चीजें किस तरफ मुड़ने वाली हैं और कौन किसकी साइड लेने लगा है। For me, a little bit of contrast that was shown. You know how when the Adams and the Nawab's sons were killed or kidnapped, they weren't as traumatized by the whole thing as the SHO was, even though presumably SHO's son is not biological, which means, you know how you said कि औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो औलाद होती है, right? Even biological हो या non-biological, or adopted. So I think there was the contrast was shown between the two in that sense as well. I think, Sana, it has to do a lot with the way Samir Khan is acting. He is a superior actor than maybe others. So maybe उसकी acting की वजह से वो चीज elevate हो चुकी है. Yeah. I mean, the way he performed it and the way he felt for the child, it was it was real. Seriously. So I want to point out something here, that there's a difference in the way the people in Dunyapur sees their world as opposed to a person who's come from outside. He refers to Dunyapur as the jungle, SHO. And whereas the people who live in Dunyapur, it's their world, it's their dystopian world, but it's their world, right? That's why, if you remember the sequence where Kushal and Sami talks about, like, Kushal tells him that how can you leave your family here? So, and he says that I can't take them to the jungle. So then Kushal says that, well, if you are in the jungle, your family should be in the jungle as well, which is a reference here, right? Like, Yeah. So is he going to bring his wife and kids or his son? I think so. Maybe looks like, but then that will be such a bad mistake, right? Why would you do that? I mean, if he's going to leave them there are chances that they can be kidnapped or killed. Here, at least, they can be saved by one or the other. But did you guys notice one thing? कि एक सीन ऐसा था जिसमें जो समीर खान का असिस्टेंट होता है, वो उसे कहता है कि सर ट्रांसफर हो रहे हैं, डीआईजी साहब का भी ट्रांसफर हो गया, नया आ गया, आपका भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो ये कहता है, लेकिन खुशहाल उसको ये कहता है कि अब तो आपका ट्रांसफर भी नहीं होने वाला. सो इज इट समथिंग रिलेटेड कि खुशहाल या नवाब जो आदम्स है, उसका ट्रांसफर भी नहीं होने देंगे अब दुनियापुर से? Maybe they want to use him. Probably, yeah. Right? Yes, it was, yeah. Because they have bought his loyalty, or they think they have. Yes. Right? So, yes, exactly. Because he said, I will do anything, right? Isn't that what he said to him? Of course. Yeah, I'll do anything for you. So this circles back to the original dialogue about the pawns in the game. So now, Sana, do you realize now? Yeah, I get it now that you're going to be used as a pawn too. एक क्वेश्चन है अब सना के लिए मेरे पास.
Why and it me? has to do with With because Quan. in the last podcast, in the last podcast, you said that I don't feel anything for Anna. I don't feel any sympathy. I don't see her character. इस एपिसोड में जब उसका अंकल है, जब वो दे आर प्लानिंग फॉर एन असैसिनेशन ऑफ जबरदस्त कसाई, और उसमें एना ये कहती है कि मैं बेगुनाह औरतों का या बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, उनका खून नहीं चाहती, एक ब्लड बात नहीं चाहती मैं. डिड शी इन दिस सीन में डू यू फील कि नाउ शी इज शोइंग हर ह्यूमन वर्जन के हाँ Well, so I think that is how things work in Dunyapur, because I don't know if you remember, Adam said that too, that we don't kill gay. Remember when Samir Khan goes inside the jail cell and he says, "क्या I've heard कि तुम बच्चों को और women को नहीं करते, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते." Maybe that is how they operate. नहीं, हर कोई तो नहीं करता. अब आप ये देखें कि उन्होंने जो एना कौन से क्लैन में, उसमें नवाब्स के क्लैन में, तो वो नवाब्स को तो मुझे लगता है कि बड़ा रुथलेस दिखाया गया है, बट एना इज शोन लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड कि नहीं, थोड़ी बहुत इंसानियत उसमें बाकी है, और ये आदम से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है. फिर आगे जाके आप इसी ड्रामे में और फिर आप ये भी देखते हैं कि शी इज ट्राइंग टू हैव सम काइंड ऑफ उसूल, सम काइंड ऑफ डिग्निटी इन फाइट के एक दुश्मनी में भी एक लिहाज रख रही है. वो एक दुश्मनी में भी एक शराफत का लिहाज कह लें, लिहाज कर रही है कि इवन प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं वो देना चाह रही है, या वो उसूलों के साथ लड़ना चाह रही है. यू नो, जैसे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट शी इज ट्राइंग टू कीप द रूल्स, टू हैव रूल्स. तो इससे भी उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत मुझे तो थोड़ा ह्यूमन लगा पहली दफा के. हाँ, थोड़ा ह्यूमन है. अलबत्ता एक्टिंग में रमशा खान बहुत yes, I mean it doesn't translate on the screen. आपको कैसा लगा सनी, आप बताएं, आप लोगों को कुछ फील आई थोड़ी बहुत इस एपिसोड में? मुझे I mean, she does have this conflict in her mind, okay, like, you know, should I or should I not? But I think she's much more conniving than the Nawabs themselves. Nawabs are more like, you know, go and get them and kill them. But she has this thing that, you know, she is more strategic and more conniving than the others. Oh, she's a planner. Yeah, see, I mean, she because the Kasai did not treat her well, she strategically killed off the men in the clan, and she arrested, sort of like, you know, arrested him, and then humiliated him in front of his own people or the entire village, and then brought him home and imprisoned him in her home and said that I'm not going to kill you, right? So she plans to still keep humiliating him and so to me, so that whole act, so as you're mentioning, that whole act of humiliating him, that was basically a part of her plan कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि जो नवाब से पंगा लेता है या टक्कर लेता है उसका हम ये हाल करते हैं कि उसको गधे पे बिठा के मुंह काला करके. सिंबॉलिक है ये बेशर्म, मतलब किसी को शर्म करना. जब वॉक ऑफ शेम थी जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में, उसी तरह इसको भी एक वॉक ऑफ शेम करवा रहे हैं कि पूरे इलाके में घुमा के कि हम नवाब के अगेंस्ट मत जाना. तो that's okay. So she's more ruthless. She is more ruthless, and she's much more conniving. Pretty much like Godfather. Like Michael was much more strategic than his dad. एक सवाल है अब फिर मेरा आप लोगों से, ठीक है? Okay. और जो मुझे अभी रह रहे के इस एपिसोड में देख के हो रहा है, I've been trying to appreciate खुशहाल्स एक्टिंग. मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह से मुझे वो एक्टर समझ में आए और मैं कहूँ कि ये एक्टिंग कर सकता है, बट अभी तक उसकी एक्टिंग में वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही. इनफैक्ट जी हाँ, तो मैं मुकम्मल कर दूं सवाल. यस, हाँ, तो जैसे वो डायलॉग मारता है, वो उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, वेरिएशंस नहीं होती, सिर्फ ऐसा करता है, थ्रो कर रहा है, जस्ट थ्रोइंग दोज वर्ड्स. सही है. मेरा सवाल ये है कि अब तो मुझे लगने लगा है कि खुशहाल का जो रोल है वो इससे बेहतर अली रजा को दे देते, जो बड़े भाई को मार दिया इन्होंने. That was my thing too. I said maybe like Ali Raza should have been the younger brother and somebody else should have been the older brother, and they should have killed him. खुशहाल को ही मार देते, खुशहाल को बड़े भाई का देके इसको अली रजा कंटिन्यू कर. हाँ, अली रजा होना चाहिए था सर. Yeah, for sure. Yeah, I agree. Kushal is not the right casting for this role. He's not that mature in his acting skills. He showed fleeting promise in the last week's episode, but this week again the same. It fell flat. His dialogues, his dialogues are not bad, but he doesn't throw the punch in his dialogues. It looks really bad.
and I couldn't even understand some of the things he was saying. Like I really had to. It's बड़ा ही वो very मतलब एक monotonous. सिंपल It's यस very दैट वाज द वर्ड. monotonous. आप Very आपने मेरे monotonous. मुंह के अल्फाज छीन लिए सना. मैं मोनोटोनस लफ्ज यूज करने लगा था. गो अहेड सना. So the dialogue delivery is monotonous, and there's no variations in his dialogue delivery. I wonder if it's a directive from the director, because everybody has a stoic expression on their face, whether it's Ramsha, whether it's Kushal, whether it's Norman Jazz. There's not ये बात ये मैंने नोट की. पता है रमशा के डायलॉग्स में भी मैंने नोट की कि वो पता किस तरह जैसे कैजुअली लोग बात करते हैं ना डायलॉग. मतलब बंदे को मार दो, हाँ ठीक है तुमने तो कौन सा मेरे साथ ये कर लिया. मतलब आपको ना इस तरह की वो इस तरह से डायलॉग डिलीवरी कर रही है जैसे बड़ी कैजुअली बोल रही है. अपने चचा को बोल रही है या उनको कि आपने मुझ पे कौन सा भरोसा कर लिया. अरे भाई ये कोई सास बहू वाला ड्रामा नहीं है. ये एक गैंगस्टर सागा बनाने की कोशिश की गई है. और इस तरह के ड्रामों में पॉज, थोड़ा ठहराव पर्सनालिटी में, थोड़ी एक रोब पर्सनालिटी में वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है. एक रोब का लफ्ज मेरे ख्याल से है कि रोब, आई डोंट नो व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड ऑफ इट. वो पर्सनालिटी मुझे दिख नहीं पा रहा है इन लोगों में जो डॉन बनना चाह रहे हैं अपेरेंटली. द larger than life जो ऑरा आएगा ना वो नहीं आ रहा है. None of them. And I don't know if the directive was like you have to have that steely, cold kind of an impression. You can be very ruthless and without batting an eye kind of eyelid kind of ruthless. अगर वो direction था actors को तो maybe they were trying to do something like that, because I'm like Norman Ijaz, in parallel I'm watching him in Bismil. He's doing a much better job in Bismil than He what he's is, doing he in is. He is, and we'll talk about Bismillah in our next podcast. So right. please So the listen to actor- the next podcast as well. Yeah, so it's not it can't be an actor's deficiency. I feel like it's a direction's deficiency. These three characters have no expression on their face when they're delivering their dialogue, or even if it's there, it's very fleeting. तो ये हमने पिछले एपिसोड में भी मेरे ख्याल से सनी ने ही इसको पॉइंट आउट किया था. और इस एपिसोड के देखने पिछले पॉडकास्ट में सनी ने पॉइंट आउट किया था लास्ट एपिसोड को देख के. और इस एपिसोड को देख के भी हमें वही चीज ही समझ आ रही है कि अगर हम इन अ नटशेल इसको समराइज करें तो दुनियापुर का जो फ्लॉ आ रहा है वो डायरेक्शन का आ रहा है. और वही बात है कि मोटरसाइकिल के मैकेनिक को आप जहाज का इंजन दे दें फिक्स करने के लिए. तो यही हुआ है मेरे ख्याल से. Looks like. So, okay, my point, okay, so questions for you guys is that, like you said, there's a stoic expression on the three characters that you mentioned, but that did not happen with the other characters. Like, like Zabardast Kasai, his acting was amazing, and it's hilarious that I'm going to talk about it later, but and then Sami Khan, he doesn't have that. Manzar Sebai, he's a Nawab, but his acting is amazing. True. I'm just thinking if like these three leaders of the gangs, unko bola gaya hai ki you have to be that cold, steely type who can ruthlessly kill and murder. I don't know if that was the directive, because नहीं, but then Manzar Sebai was very ruthless too. I mean, he's very ruthless. हाँ सनी आप खत्म करें फिर मैं जवाब देता हूँ. Yeah, no, that's all I wanted to say. I'm wondering if that's the case, because Sami is supposed to be the human quotient in this, right? He comes from a different world, and he's like, flabbergasted to see what's going on here in this lawless country. The Nawab was the leader, but now he's kind of taking his step back, right? So maybe he doesn't have to. He's not given that directive. You have to look cold, steely. But I think these others might have been given that. I don't know. That's my only possible explanation about Norman Ijaz failing in performing. I don't think so, because Manzar Sebai was the Nawab. He was the lead, and he still had amazing expressions. And then and then they had shown the Kasais as the butchers, but then Zabardast Kasai was amazing too. Agreed. तो इसका तो सना मेरे पास यही जवाब है कि एक एक्टर की अपने एक्सपीरियंस, एक अपनी इंडिविजुअल एक्टिंग भी होती है. मंजर सेबाई जाहिर बात है एक बहुत आला पाए के एक्टर हैं जो माहे मीर इनकी मूवी आई थी उसमें जबरदस्त एक्टिंग की थी. जो खुदा नहीं बोल में जो ये बने थे उन सब लड़कियों के बाप, उसमें आपने देखा था कैसी जबरदस्त एक्टिंग की. तो पुराने मंझे हुए आर्टिस्ट हैं. और सिमिलरली नैयर एजाज के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि पुराने एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर है, बहुत जबरदस्त
जबरदस्त कैरेक्टर रोल्स करते हैं, तो वो अपना फ्लेवर ला रहे हैं, समी खान अपना फ्लेवर ला रहे हैं। एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी तो यही होती है ना कि वो लेसर नोन एक्टर्स को एक अच्छे पाए पे पहुंचा दे। खुशहाल ने और भी ड्रामे किए हैं और मेरे ख्याल से उन ड्रामों में उसने अच्छी एक्टिंग की है, इससे अच्छी एक्टिंग की है, डायलॉग डिलीवरी में भी, एक्सप्रेशंस में भी। रमशा भी इतनी बुरी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसको भी देख के लगता है कि थोड़ा ना नहीं ग्रिप नहीं कर पा रही, खुशहाल भी ग्रिप नहीं कर पा रहा। मुझे तो डायरेक्टर से यही थोड़ा सा गिला रहेगा कि जो अच्छी एक्टिंग करता है उसे मार देते हैं। अली रजा को मार दिया, जबरदस्त कसाई को मार दिया। So other thing is कि you know Shahid Shahapad has directed Sushal before in Mohabbat Gumshada Meri, and he had the same dialogue delivery in that drama too. But in that drama, his role was such that this kind of delivery was fine. He was like a musician kind of guy, like rapping away. तो क्या इन नटशेल डायरेक्टर का फॉल्ट ही कह सकते हैं ना कि वही बात हो गई कि इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए ये डायरेक्टर अभी तैयार नहीं है। I think direction bhi hai, but I think there's a whole team with it, right? There's an assistant director, there's other actors on the sets, everyone's watching each other. So I don't know how things work in a setting like that, because when you're I'm just trying to tell my work, when you're at work and we have a patient and we have a whole team, we kind of do consult each other, talk to each other to see where we're lacking, what else can we do. But I don't know if they do it on a set too. पता नहीं, प्रोसेस का मसला है थोड़ा बहुत, जैसे सना कह रही है ना, प्रोसेस का ही मसला है। आप जैसे रिलेट कर रही हैं आप अपने प्रोफेशन से सना, तो वही है कि प्रोसेस का इशू है थोड़ा बहुत, किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि हर किस्म के जॉनर के लिए या हर एपिसोड के लिए एक अलग डायरेक्टर भी होना चाहिए। गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा, स्ट्रेंजर थिंग्स में हमने देखा कि द डायरेक्टर्स आर नॉट इनसिक्योर कि अगर इस डायरेक्टर ने अच्छा कर दिया अपनी एपिसोड में तो मेरा पत्ता कट जाएगा। तो मतलब अगर कोई एक्शन सीन है तो उसके लिए अलग डायरेक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से। Yeah, that's fine. Obviously a nephrologist cannot be a surgeon. A heart doctor cannot be an eye doctor. तो यही है। तो फिर अब हम उसको अगर समराइज करें, but I do want to mention Zabardast Kasai. We talked so much about him. we spent so much time, and then he's gone. यही तो गिला अच्छे एक्टरों को मारे जा रहा डायरेक्टर, या तो मीडियोकर बना दिया उसने ड्रामे को, कि जो अच्छी एक्टिंग करेगा। मुझे तो लगता है कि ये क्राइटेरिया बन गया है अब इनको। ये शायद अब मेरी समझ आ रहा है, समीर खान भी चला जाएगा। हाँ, शायद खुशहाल और रमशा जान के अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे कि हमें मार देगा। समीर खान जो है ना वो आएगा बुरी एक्टिंग में, और नौरोज आदम तो शुरू से बुरी कर रहा है इसी वजह से कि हमें मारना दे डायरेक्टर। Sunny and I were just laughing. We're like, we spent so much time talking about him. We promoted his old shows. यार देखो, एक बात है, अगर तो ये सिर्फ इसलिए करते हैं जैसे कि एक शॉक एलिमेंट इन्होंने रखा है कि हमें लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर आया, ये ऊपर जाएगा, और मार देते हैं उसको शॉक एलिमेंट की वजह से। सो इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, क्योंकि वो एक कैरेक्टर आके ऐसी जालिम एक्टिंग कर जाता है अपनी आवाज से, अपनी एक्सप्रेशन से, कि आपको लगता है कि चलो अब शो में आइए जान और ये कुछ करेगा, लेकिन उसी को मार देते हैं। अब जाहिर है जबरदस्त कसाई का बेटा है, अब वो आके बोलेगा मुझे रिवेंज लेना है। अपेरेंटली द अट्रैक्टिव गाय। अब एक्टिंग में वो भी फ्लैट था बड़ा, वो भी डायलॉग डिलीवरी में ऐसे ठुस पटाखा किस्म की डायलॉग डिलीवरी कर रहा था। तो जो यही क्राइटेरिया है दुनियापुर का, जो अच्छी एक्टिंग करता है उसको मार दो, तो बाकी सारे के सारे जो है ना वो खराब एक्टिंग कर रहे हैं। एनीवे, सो बहरहाल फिर भी ऑन अ लेवल ऑफ स्टोरी प्रोग्रेशन दिस एपिसोड वाज बेटर। एक्टिंग नीड्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अगर मैं रेटिंग को आज अपनी थोड़ी सी ब्रेक कर दूंगा, मैं इस तरह से कहूंगा कि स्टोरी प्रोग्रेशन या स्टोरी में मैं इसको दे सकता हूं 10 में से 8 नंबर, और एक्टिंग को मैं दूंगा 5 नंबर, डायरेक्शन को मैं दूंगा 3 नंबर। ये मेरी रेटिंग है इस एपिसोड की। So what is 8 plus 5 plus 3? नहीं, वो 8 plus 5 plus 3 वैसे आप करना चाहे आउट ऑफ 13, लेकिन वो एक अलग 13 divided by 3 divided by 30 क्या होता है?
नहीं I'm अच्छा thinking आप मीन मोड मीडियन में ना पढ़े बहन आप बस रेटिंग दें तो इसका मीन 5 होगा सिर्फ from your side or 5.5, right? 5.5 होगा या 5.75? लगा ले 5 लगा ले अच्छा ठीक है मेरी तरफ से just because of that one scene where they talked about that कि मेरा बेटा है I found that really intriguing. So I'm gonna give it 6.5. For me, I would say it's a 6 because I feel like the story has really picked all of a sudden. A lot happened in this last episode. There were still like tons of rooms for improvement. I felt like they wasted a lot of time on useless scenes. Yeah, a 6 from my side. Overall 6. ऑलराइट सो मेरे ख्याल से ये दुनियापुर का हमारी तरफ से इस हफ्ते का तज्जिया था या पॉडकास्ट था ओवर टू सना और सनी I think we can wrap up now. We had a long discussion on Dunyapur, so it still holds promise, and I'm still watching it simply because it promises to present a different type of story, and so far they've held on to that promise. So I'm gonna stay tuned for Dunyapur. Sana, do you wanna wrap up? I just want to say that we always say कोई कुछ नया होना चाहिए कुछ नया, so it is new, so do watch it. Absolutely. All right. So bye for us now. We had a great time discussing Dunyapur, and I will continue to do so because we are going to watch this show. So we're going to be back again with a brand new episode and a brand new review. Till then, stay tuned. All right, inshallah. Talk to you guys soon. All right guys bye Allah Hafiz Allah Hafiz. Bye.